ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। आप सभी का स्वागत है आज के। We welcome all of you to today's Srimad Bhagavad Gita class. और हम अध्ययन कर रहे हैं गीता के We are studying तृतीय अध्याय का 41 Bhagavad Gita, 3rd chapter, verse 41. में हमने सुना कि भगवान ने बताया In the previous class, we heard Bhagavan said, स्थान कहाँ पर है। where is this karma situated? 37वें श्लोक में काम को वेरी बताया था कि Because in the 37th verse, he had referred to karma as an enemy, अध्यात्म मार्ग पर that any person who wants to परम वैरी follow the spiritual path, और वैरी होने के कारण for him this is the greatest enemy, and that is why this enemy should be destroyed. स्थान को पता लगाना है तो उस And in order to destroy it, we should know its locations, where is it seated. ज्ञानम आवृत्त देहिनम। और ये किस प्रकार से हमारा अनर्थ करता है And how it creates anarthas for us. Bhagavan explained that process also. He explained that it covers our wisdom, our discrimination.
here jnana refers to viveka. This is the main quality of buddhi, that is viveka, or doing discrimination, understanding what is right, what is wrong, so that we can decide what we should do and what we should avoid. But if that faculty of discrimination itself gets covered, then we are unable to discriminate between right and wrong, and then we fall into misery. That's why he explained that तो ये जो सम्मोहन है ये this अनेक प्रकार से bewilderment होता है, can happen in many ways, क्योंकि इंद्रिय, मन और बुद्धि तीन इसके because स्थान the बताए। वास्तव senses, में तो mind, and intelligence, अहंकार भी three है, locations हमारे were पिछले mentioned. प्रवचन में भी कहा था। Ahankar is also there, as I told in तो the ये हर previous एक स्थान class. पर ही So उसको इंद्रिय को ढकता है। it covers the senses at every क्योंकि level, जैसे इंद्रिय है तो इंद्रिय का because वास्तव में like कार्य है केवल senses विषय are के there, संपर्क में आकर the उसकी सूचना देना कि the only job of senses क्या is to विषय है। contact the sense objects and लेकिन relay the इंद्रिय information that what it जब is. काम से ढक जाती है या काम But से when senses प्रभावित get होती है covered तो by इंद्रिय में kama, विषय अच्छा लगता है। then they वास्तव start में liking इंद्रिय में the अच्छा बुरा sense कुछ नहीं है। objects. इंद्रिय तो Actually, there is nothing good or bad in उपकरण the है, senses. इंस्ट्रूमेंट It है। is just an instrument. लेकिन जब उसमें काम का प्रभाव होता है तो But इंद्रिय when it को वो is चीज़ influenced अच्छी by लगती kama, है। then the हमने senses पहले भी start कहा था liking. इंद्रिय से अर्थ है राग द्वेष व्यवस्थित हो। और मन वही And then ज्ञान इंद्रिय से mind, जब मन में आता है तो मन कहता है when कि the अच्छा ये knowledge तो comes बहुत from the सुखदायक है, senses फलदायक है। to the mind thinks whether it is favorable or और फिर unfavorable. बुद्धि में जाता है तो And then उसको it goes to the buddhi. ढकता है तो फिर वो कहता है इसको And प्राप्त when करना चाहिए। buddhi हालांकि is बुद्धि covered को by कहना kama, चाहिए कि buddhi नहीं ये ideally ठीक buddhi नहीं should है, reject that this sense object is लेकिन not जब good for उसका us, विवेक ढक you. जाता है But तो then कहती है it's हाँ the इसको vivek is covered, it प्राप्त starts करना planning चाहिए और to उसको acquire. प्राप्त करने की युक्ति फिर हमको बुद्धि It's देती है। the buddhi starts giving the logic और how to उसका जो acquire the भ्रम का object. मूल स्थान है And the वो main place है where this अहंकार। bewilderment lies is the ahankara. तो वास्तव में So actually, अहंकार के दो भाग हैं, ahankara has two एक divisions. जड़ भाग है, एक One is the चेतन भाग है। material part and the one is चेतन the भाग जो है conscious वो part. आत्मा के अंदर है, The जड़ conscious भाग जो part है is वो in the शरीर के atma अंदर है। and the material और part इन is in the दोनों का जब body. मिलन होता है And when तो उसी these को two चित जड़ ग्रंथि combine, कहते हैं। then it is called the तो ये knot, काम जो the है वो chitjada चेतन granthi. भाग में नहीं है, So the kama is ये not in केवल the जड़ भाग में conscious ही है। part, it is only in the inert material चेतन part. भाग में तो क्योंकि हम भगवान के अंश The हैं conscious part, और because वास्तव we में are आत्मा anshas of के अंदर Bhagavan, कोई दुख है नहीं, असंगो है, and actually निर्दोष है, there is no suffering in the सुख Atma. दुख से वो परे है। Atma is beyond क्योंकि happiness and suffering. उसका अध्यास जो है But because the वो जड़ adhyas अंश के साथ में हो गया है, उसने उसको अपने has ऊपर happened with आरोपित the कर लिया है inert part, the और superimposition has स्वरूप को भी happened. उसके ऊपर आरोपित कर लिया है। आपस में Uh, Both एक have दूसरे का superimposed on अध्यास each है। other. तो जड़ के गुण चेतन में प्रतिबिंबित होते हैं So the quality of matter gets और चेतन के reflected गुण जड़ in में the प्रतिबिंबित होते हैं। conscious being, and the qualities of conscious being get इसलिए जो reflected in the inert चेतन matter. अंश के गुण हैं सत चित, That's why the वो quality शरीर of में the प्रतिबिंबित होते conscious हैं। being, हम शरीर की सत्ता रखने की कामना करते हैं, शरीर को सुखी when they रखने की get कामना reflected करते in हैं। the body, then we desire to keep the और body जब जड़ अंश body के happy, satisfied. गुण जो हैं चेतन में प्रतिबिंबित होते हैं तो उसको लगता है कि मेरी And when प्रगति हो inert, जाएगी, the quality of inert matter gets मेरे को reflected सत्ता in the मिलेगी, conscious being, then we start feeling मेरा that we कोई will ज्ञान die, है, मैं दुखी हूँ। and I am तो इस ignorant, तरह का I am जो suffering. पारस्परिक अध्यास So इन दोनों में this चलता है mutual, this adhyas, it तो happens. आत्मा जो है वो भगवान का अंश है, So the अभिन्न अंश है। Atma is an angsha of Bhagavan. इसलिए अंश का अंश की तरफ स्वाभाविक झुकाव होता है। So the angsha will have natural जैसे tendency to lean जल towards अंश the जो है angshi. The उसको part will have natural tendency to lean कहते हैं towards the whole. क्योंकि उसका मूल Like we see, the सूर्य है। water has a natural tendency to move towards the ocean अग्नि का because जुड़ाव सूर्य की its तरफ source है, is ocean only. मूल स्रोत अग्नि है। Fire has natural tendency to move towards तो sun इसी प्रकार से because its भगवान के origin अंश is हैं तो sun. वास्तव में हर So
since we are anshas of से उनका Bhagavan, so है। we have natural लेकिन ये tendency जो to काम lean towards to जैसे him, यहाँ पर कहा गया ज्ञानम आवृत्त but देहिनम, our knowledge gets covered by तो kama. फिर हमारा झुकाव भगवान की Then तरफ, परमात्मा की we तरफ ना do होकर not विषय की तरफ हो जाता है, lean विषय में ही towards अपना मन Bhagavan. डूबने लगता है। Our tendency is to lean तो इस towards विषय में भी हम सब sense लोग डूबे objects. हैं, But in sense objects also, we are searching for happiness only, और आत्मा में because हम Bhagavan is Sukha Swarup. There is यदि no उसको ना पहचान dukkha or कर suffering in the इस Atma, सांसारिक but we do पदार्थों not से ढूंढने में, recognize that. Rather, उनकी सत्ता we बनाने में हम लगे start रहते हैं, searching for यही हमारी happiness बीमारी in है। these sense धन objects. हो, मकान हो, पारिवारिक बंधु हो, तो यही मोह है, So, this is moha, और ये ढकने के कारण होता है। and it happens due जब उसका to विवेक ढक covering. जाता है, When our इसलिए vivek भगवान ने कहा discrimination कि gets covered. देहिनम यह वैरिणम, कि यहाँ That's पर why ये Bhagavan वैरी है। had said that और ये this is देहिनम the शब्द प्रयोग enemy. किया इस श्लोक में, पिछले श्लोक में जो हमने पढ़ा था, तो देहिनम का मतलब भी यही है कि देहो अस्ति अस्य इति देहिन, जिसका देह है, So यानी कि Dehinam here आत्मा। means one who has deha, one who has अगर body. आत्मा मुक्त हो जाए तो उसमें फिर If काम it is क्रोध का not कोई of प्रभाव नहीं है, Atma, तो देह because if उसका Atma देह gets रूप शरीर है, liberated, then there जो is no influence of शरीर Kama में on it. अध्यस्त है, So Dehinam उसी refers के लिए to काम जो है what is विपरीत परिणाम superimposed on the body. प्रभाव दिखाता है। Kama is the enemy for that. और मोह करने का मतलब है कि Having moha चारों means, के प्रकाश को ढक देता है, जैसे बिजली चली जाए तो यहाँ पर अंधेरा हो जाएगा, so तो if वास्तव में स्वभाव में electricity मोह goes जो away, है here वो everything will प्रकाश be का है, dark. So Atma is the Nitya Prakash. Its तो qualities उसका are दूर भी eternal. नहीं किया जा सकता है, So the उसका qualities त्याग नहीं cannot हो be सकता है, removed लेकिन from the भीतर से Atma. ढक जाती है। But और from ये बहुत outside, if ही it gets covered, एक आश्चर्यजनक चीज है कि so अगर this कोई is a बल्ब great है surprise और वो that जल रहा suppose है, there is a bulb is तो switched बल्ब को आप on. ढक भी लेंगे तो बल्ब Even उसमें if you cover रोशनी the देता ही है, bulb उसको within लगेगा itself, कि उसको it will ढकने have से फिर light. अंधेरा हो जाएगा। It is not that if it gets covered तो inside आत्मा bulb का also स्वयं there will be प्रकाश जो है, darkness. Similarly, और उस Atma has प्रकाश its को Swayam आप Prakash, बिजली के संचार and की तरह अंधेरा नहीं कर सकते हैं, उसको बाहर से so ही ढक सकते हैं, जैसे you यहाँ can पर है। cover it externally, not internally. तो फिर ऐसा क्यों होता है कि हम को अपना So then, अज्ञान रहता है why does it happen कि that ईश्वर we मुझे have ज्ञान our हो गया कि मैं agyan हूँ, or तो फिर ignorance? मैं कौन हूँ The Jiva knows that I ये am, क्यों ज्ञान नहीं but होता? who I am, Jiva does यदि not अभी know भी that. कहें कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, If it gets तो the समस्या का knowledge समाधान ही हो that I जाएगा। am not this body, I am फिर different क्या from this होता है? body, then all problem is solved. तो ये But बहुत ही it doesn't get आश्चर्यजनक that वस्तु है, knowledge. So it's a great दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा wonder संभव if नहीं you है think logically. कि It is आत्मा को not कभी ढक possible लीजिए, माया से ढक लो उसको, that बाहर से किसी से ढक even if लो, you cover किसी it और प्रकार से externally ढक लो, by Maya, तो अंदर तो उसको by पता Kama, ही है Krodh, whatever, कि मैं हूँ। internally, Atma knows that I आदमी am. जब क्रोधित हो It जाता है should be व्यक्ति, there. तो उसको तो पता रहता है कि मैं कौन हूँ, Even if the man is angry, he knows who I लेकिन am. But ये भगवान की माया है, this is इसलिए Bhagavan's भगवती Maya. माया यन्नयेन विरुध्यते। ये प्रश्न विदुर जी ने मैत्रेय ऋषि से किया था Vidurji had asked this question to Maitreya कि ये जो that how जीव is है it possible that this ये Jiva, ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्यमुत बंधनम, कि जीव तो ईश्वर है, ईश्वर मतलब स्वतंत्र है, Jiva who is Ishvara, तो ये Ishvara here बंधन इससे means कैसे हो जाएगा? Swatantra, free. How does तो उन्होंने it बताया be था कि become स्वयं bound? भगवतो माया, So Maitreya had ये replied भगवान की माया that है, इसलिए माया this का is मतलब है Bhagavan's Maya. अघटन घटन पटी ऐसी, कि जो चीज असंभव लगती है उसको भी संभव कर देती है, यही कहने So का Maya मतलब है, is लेकिन that वास्तव में which संभव makes the कैसे हो impossible सकता है also as possible. कि जो स्वयं Otherwise, प्रकाश how is it वस्तु है उसको ढक possible दो तो अंधेरा that हो जाए, Atma, which is Swayam Prakash, तो you ये cover माया it का प्रभाव है। and it और falls in क्योंकि ये ignorance? भगवान की माया है, So this is the इसलिए power ये of किसी Maya, सहायता के and बिना because it is Bhagavan's Maya, भी इससे so मुक्त नहीं हो सकता। because that's why without the help of इसलिए आत्मा Bhagavan, इतना बढ़िया nobody can get liberated from this Maya. So ज्ञानी no है matter how कि much you जब तक practice उसको yoga or भगवत माया jnana, मिलेगी until and unless you तब have उसको the मुक्ति नहीं mercy मिलेगी। of Bhagavan,
it is not possible for you to get out इसलिए of भगवान the ने clutches of कहा है Maya. ये प्रपद्यंते That's why मय्यावेश Bhagavan says, जो केवल मेरी शरण लेते हैं only one who takes shelter of me क्योंकि can हमारे cross अंदर over this Maya. अगर इतनी शक्ति होती Because if कि we हम would माया के have प्रभाव को दूर कर so सकते much power to तो get rid माया of के the प्रभाव influence को of Maya, then we would have never been under the influence of Maya इसलिए to माया begin with. कहते कि मुक्ति जो है वो भक्ति के बिना संभव नहीं है So, mukti is not possible without तो bhakti. भगवत जो भक्ति है वही वास्तव में मुक्ति है So, bhakti is real mukti क्योंकि because हम उनके अंश हैं और हम मोहित हैं we are his मोहस्य anshas and विमोहयते we are bewildered. इतै विमोहति मोहित मतलब विशेष रूप से मोहित है So, कोई bewildered मोह here, mohyati मोह means नहीं है जैसे uh, संसार में हम कुछ मोहित हो जाते हैं फिर हमारा दोह वो मोह दूर हो जाता है हम bewildered किसी in a न very किसी special प्रकार way. करते हैं उसको समझते हैं जानते Normally, हैं when we are illusioned or bewildered in this कई world, we दर्शन deal with ऐसे होते somebody, हैं we जो think he हमारी is बुद्धि कहता friend, है कि but वास्तव then में later we वो understand that no, मोहित that हो is जाता not है true. Then that moha goes away. लेकिन ये मोह ऐसा है जो अपने But आप हटने वाला this नहीं है moha that we have, the moha of इसलिए Maya, it will not विमोहयते go away on its own. विशेष That's रूप why से he said विवेक विवेक को मोहित vimohayati. कर देता है It covers our viveka तो itself. जो साधक लोग हैं उनको इस बात को ठीक से समझना है कि अगर हमको इस संसार सागर से पार So the होना है sadhaka has to understand वैसे तो हमारा carefully उद्देश्य that मुक्ति नहीं है if we have है ना to लेकिन अगर go मुक्ति है beyond तो this उसके लिए world, भक्ति करनी पड़ेगी although our goal is not और mukti, भक्ति का मतलब क्या है but even if it is भक्ति का bhakti, मतलब but है even if कि one wants mukti, he has to do जहाँ bhakti. आश्रय है सेवा भी वहीं करें आप So wherever जब we have आश्रय ashray, wherever we have taken सेवा shelter, दोनों एक we होते should हैं do seva there only. Bhakti जैसे means हम wherever we have taken समाज में shelter, देखते हैं we do लोग seva there. कार्यालय में कार्य करते हैं Like we see in the society when people work in an office, वो अपनी सेवा देते हैं so they work there. यानी कि उनका आश्रय स्थान वो कार्यालय है वो So that ऑफिस है office is the place of their ashray. उसी से आश्रित है वो They are dependent on और that अपनी सेवा company भी or वहीं पर office, देते हैं and they लेकिन give their उनकी service प्रीति also वहाँ there नहीं है only. But where उनकी is their प्रीति कहीं और preeti? है Their preeti is in तो home. इसलिए ये भक्ति नहीं है So this is not bhakti. जब आपका आश्रय स्थान और प्रेमास्पद प्रेम का विषय दोनों एक होंगे तो उसी को भक्ति कहते हैं Bhakti happens when तो ये भी इसलिए you कहा have जाता है love और ये इसको हमको समझना चाहिए कि wherever you जैसे have लोग taken ashray. मंदिर मठ बनाते हैं So we पूजा see पूजा that करते people हैं make mathas, temples. तो The सेवा तो pujari भगवान की is करता doing है seva in उसी से temple. सब खर्चा So he चलता is है doing seva to Bhagavan लेकिन in the प्रीति ठाकुर temple. जी में He नहीं is होती getting paid, but he doesn't have preeti or लोग love आते हैं for ठाकुर जी the को deity. देखने के लिए People come और to take पुजारी का darshan विरोध of करता है the deity, but the pujari is सेवा focused on करने the के लिए people. वो आ रहे हैं और दान दक्षिणा कर रहे हैं उनको ये So the देखना है कि people जो are coming for taking darshan of सेवा deity, they are giving donation for सेवा deity, कर रहा है but the जिनकी pujari's जिनका focus is on the people. जिनके That कारण means उसका he is not focused on the deity योगक्षेम चल रहा है where he has taken shelter. He तो doesn't इसलिए have ये preeti भक्ति for नहीं है the deity. तो So this is जहाँ not हमारा bhakti. आश्रय है वहीं So हमारी wherever प्रीति we have है ashray, wherever we have taken वहीं shelter, लक्षण if है we have preeti, bhakti for that भक्ति रस person अमृत सिंधु only, में इसको that is called आपको bhakti. एक छोटे से वाक्य In में बोलते Bhakti हैं कि Rasamrit Sindhu, Sri Jiva Goswami सेवा also शक्ति जहाँ speaks होती this. है वहीं In a small sentence, he जो आपका mentions उद्देश्य होता है that आसक्ति भी वहीं होगी wherever you have अगर उद्देश्य आपका कहीं है मानो उद्देश्य आपका attachment, that is मुक्ति your है uddeshya. If your और आप goal is mukti ठाकुर जी की सेवा भी कर रहे हैं तो वास्तव में वो भक्ति नहीं है क्योंकि and you are उद्देश्य doing आपका seva to Bhagavan मुक्ति also, आसक्ति मुक्ति that is नहीं है not bhakti प्राप्ति because your attachment is towards mukti, not towards the Thakurji, तो not इसलिए towards the साधक को deity. देखना है कि That's why the हमारी sadhak has प्रीति to check हमारा आश्रय हमारी सेवा वो एक में है कि वो बटी हुई है
that और अगर वो बटी हुई है तो वो the क्यों sadhak बटी has है, to ये check भगवान की that is it divided. बात में क्यों बोल रहा हूँ My कि ये जो preeti is बोल रहा towards हूँ something else. I have taken इसको ashraya of बोलते हैं Bhagavan. काम। Is it divided? So if it is divided, it is because of kama, what Bhagavan is calling as enemy. और वो है क्योंकि हमारा And विवेक उस काम ने ढक दिया है। that happens because our वास्तव में तो sense of भगवान के discrimination is भगवान covered के आश्रित जो by हैं kama. तो हमारे Actually, उसमें if we ढकने का do seva to Bhagavan, if we take shelter of Bhagavan, what is the loss for us? एक ढकने के कारण ये बात हम सुनते रहते हैं पर ये हमारे अंदर में प्रविष्ट नहीं होती We है, always hear about यानी कि हम bhakti, इसको अपनी but do बुद्धि not से get, पकड़ते नहीं है। but we are not able to अगर हम hold on उसको to it with our तो buddhi फिर उसके because it is अनुरूप हम covered. कार्य भी करेंगे If करेंगे we can क्योंकि hold on to it with our शक्ति उसको buddhi, पकड़ती है। then we work accordingly because उसी का the विवेक quality of what is the quality of buddhi? Whatever it अगर हमारी understands, बुद्धि जो we है work विषय में पकड़ी accordingly. हुई है तो विषय में So जितनी भी if युक्ति our बताएगी कि buddhi इसका is विषय में मनुष्य से caught up by the sense सुख objects, मिलेगा और कैसे then उसको प्राप्त we करना चाहिए just इत्यादि work to attain sense objects. लेकिन अगर हमारी बुद्धि भगवान में But if our buddhi is in लगी है, Bhagavan, बुद्धि से हमने उसको समझ लिया है if we तो have फिर बुद्धि understood हम यही विवेक देगी कि ये what is कार्य Bhagavan by करते our हुए buddhi, आपको आपके then गोल our से buddhi, our viveka will say that whatever you are doing, it is going to इसलिए take you इसकी away from समझ your बहुत goal. आवश्यक है। That's why it एक is very साधक को important to understand this. Every sadhak should understand इसी this कारण से carefully. भगवान ये सब बोल रहे हैं, That is why Bhagavan is explaining all this. श्लोक हम We पढ़ते keep रहते हैं, reading these verses, जाप भी we करते हैं, memorize them ध्यान also, भी करते हैं, we लेकिन recite them इसकी also, गहराई तक हमको but जाना है। we have to go deep तो into हमें ये the देखना purport है of कि the हमारी verse. कामना का So we विषय have क्या to है। check what do we actually desire within our heart. कामना का विषय भगवान है या कामना का Do we विषय actually want Bhagavan सांसारिक or we want चीजें। worldly pleasures? तो कम से कम हमको So at इसमें तो least स्पष्टता रहनी चाहिए कि we आप जो कर should रहे have हैं clarity within us. उसको कीजिए, Whatever you are doing, do it. लेकिन उसमें आपको But at स्पष्टता least रहनी you should have चाहिए। clear understanding आपकी बुद्धि बताती तो because रहेगी आप ये then कर रहे हैं, your लेकिन buddhi वास्तव will में keep telling you आप जो that बोलते हैं दूसरों को उसके अनुरूप what you आप tell करते हैं या others, नहीं you करते हैं, बुद्धि yourself don't आपको follow that. भटकाती रहेगी। So your इसलिए buddhi बुद्धि will में keep pricking उसको you. जमाना, That's why उसको it is very दृढ़ important करना बहुत to आवश्यक है। make it make get a firm understanding of इसलिए this बार in the बार buddhi. तीसरे अध्याय में You भगवान ने should. बुद्धि की बात की ना, That's why इसलिए again and भगवान again कहते हैं Bhagavan कि spoke बुद्धि about buddhi in the मताम second समयति chapter. ऐसा बुद्धि बता बुद्धि मताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम। तो वास्तव में बुद्धि का काम यही है। So actually जब भी this is the संसार job के of विषय में जो भी buddhi खोज रहे हैं बस because वो नहीं in खोज रहे, ये what you जानने are की looking कोशिश for कर in रहे the sense objects in this world is also हैं Bhagavan only. कि क्या चाहता है, सुख Ultimately, चाहता है what do you या want? You want समाधान sukha, चाहता है। happiness. लेकिन सुख Every तो वो person सुख wants है happiness and he wants to get rid of यही से misery, स्पर्श suffering. दुख योनि ये बते। But there is no आप sukha तो in बच्चे this की चोट से कह रहे हैं कि जितनी sense भी विषय objects. वस्तु हैं ये There is सब no दुख के sukha. योनि है, Bhagavan has told ये that सुख they are के all स्रोत sources है। of कहाँ बोला misery. उन्होंने कि ये सुख के स्रोत है? Where did he say that these are तो किसी sources of खाई में pleasure? आप जाएं So if you और enter a coal mine आप सोचें कि वहाँ आपको गुलाब जामुन मिल जाएगा, and you look for a gulab jamun ऐसा there, नहीं है। that is not possible. कोयला ही मिलेगा आपको। There you will get coal only. अब आप कोयले को गुलाब जामुन समझ के खाने लगे तो वो आपकी बुद्धिमत्ता है, So if you लेकिन वहाँ start तो eating आपको गलत coal मिलेगा। thinking it is gulab नहीं jamun, तो that's your भगवान जो है वो foolishness, आनंद but you will not है, get it. आनंद स्वरूप है, सुख So स्वरूप है। Bhagavan is Sukha Swarup, he is सुख तो Ananda वहीं से Swarup. प्राप्त हो सकता So है, we विषय से can सुख get प्राप्त Sukha नहीं only हो from him सकता। only. It is not possible to derive जब तक pleasure हमारी from बुद्धि sense में निश्चय objects. नहीं होगा Until and unless we get काम convinced हमारा पीछा about this छोड़ेगा। fact, till then Kama will not leave भगवान us. कहते हैं कि इसको छोड़िए आप, So Bhagavan is telling you, give it up. इसी दृष्टि से कह रहे हैं। He is इसलिए telling अंतिम from this श्लोक में point of कहते view हैं only. तस्मात् त्वम् इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजहि ह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। अतः हे भरत Translation. श्रेष्ठ Therefore, O पहले best of the इंद्रियों को Bharatas, नियमित करके by first regulating the senses, त्याग दो, cast off this embodiment of sin or धैर्य desire और which सत्य के साथ destroys चित्त का discernment and निश्चय immediate realization of truth.
उस काम को फिर वो कहते हैं कि So इस here काम he को is again telling, एनम जो है संस्कृत में and is telling enam in Sanskrit. प्रयोग किया जाता है जो वस्तु बहुत ही निकट हो, Enam is used for that object which is समीपतरम very close to us. एतदो रूपम। जो निकट वस्तु होती है उसके लिए Whatever is very close, तत्परोक्ष विजानीयात् अदस एतत् तत् और इदम। तो इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ती चैतदो रूपम। इदम शब्द का प्रयोग किया, इदम शरीरम कौनते है, so he has used the word idam. इदम शब्द का प्रयोग किया भगवान ने। तो इदम क्योंकि शरीर हमारे आत्मा So he is telling idam because body is extremely close to the atma. But for kama he is using enam. एतद के लिए आया। तो ये बिल्कुल अंदर ही घुसा हुआ है। तो So this is totally inside. उसमें जहाँ आत्मा एक एक तक ये हुए, तो कहते हैं कि इसको प्रजही, इसको आप So he is telling prajahi means you remove this, destroy this. प्रजही और उसके बाद में हेनम शब्द है श्लोक में। So here he is using the word prajahi and hyenam. So you can understand it in two ways. और एक तरह से देख सकते हैं कि प्रजही ही एनम, इन्हीं के एक बार तो क्रिया होगी प्रजही। प्रजही का मतलब है कि इसको मारो। So one kriya will be prajahi, means you kill this. निश्चय रूप से इसको निश्चय रूप से इसका हनन करो। Definitely kill this. प्रकृष्ट रूपेण जही प्रजही। From han dhatu we get prajahi. दूसरा ओहाक त्यागे धातु है, उसका रूप होगा तो प्रजही ही। The other rupa will be prajahihi and then enam, कि इसका त्याग कर दो, means you give it up. तो इस पर इसलिए दो मत हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रजही, So there are two types of understanding. प्रजही ही एनम है, क्योंकि काम को आप त्याग सकते हैं, मार Some नहीं people सकते। say it is prajahi hyenam and some people say it is prajahihi and then enam. महाबाहो काम रूपम दुरासदम, वहाँ कहते हैं इसको मारो, वहाँ तो जही शब्द। तो Bhagavan is telling you kill this. जही शब्द का प्रयोग किया, So he used the word jahi. इसलिए यहाँ भी जही ही है। That's why here Jahi also jahi is there. ही है, ना कि जही ही है। तो प्रकार से इसकी व्याख्या है। So it can be explained in two ways. त्याग दो, Here we have used jahihi and taken the meaning give it up, because in the beginning you can only give it up. This is how it is explained, that in the beginning you can give it up and later when you become more powerful then you can kill it. Like Bhagavan Shiva, कर दिया था, he burnt kama by opening his eyes. तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। तो उसके तीन अधिष्ठान भगवान ने बताए पिछले। So Bhagavan told about three adhishthanas: senses, mind and intelligence. तो जैसा हम समझते हैं, as we understand, and Bhagavan will also speak that, so Bhagavan will say that mind is more powerful than senses and intellect is more, buddhi is more powerful than the mind. इसका मतलब ये है कि इंद्रिय के So what it means is that मन के काम, मन में जो काम घुसा है उससे आसान है, और मन में जो काम घुसा है उसको the kama which has entered the mind, it is easier to give it up than the kama which has entered the buddhi, because buddhi is more powerful. So if kama enters the buddhi, buddhi will use it. Like suppose you have a friend, लेकिन एक थोड़ा कमजोर है, दूसरा उससे ज्यादा let's say you have three friends and one is stronger than the other. तो अगर आप खेलते हैं उनके साथ में, so if you are playing with them, तो जो कमजोर है उसको आप आराम से, you can easily defeat the weakest of the three. लेकिन अगर आप पहले ही आप थक गए तो आप कमजोर वाले से भी
हार जाएंगे। But if you got tired in the beginning only, you will get defeated by even the weakest one. So Bhagavan is telling the order. So he is telling that first you regulate your senses, then you regulate your mind, then control mind, and then control the buddhi. क्योंकि आरंभ में काम इतना शक्तिशाली होता है कि आप Because in the beginning, karma is so powerful नियंत्रित नहीं कर सकते, that you will, in the beginning, you will not be able to control this karma. In the beginning, won't be able to regulate. आपके मन में काम आता है कि ये इसको मैं So, चुरा लूं, if you see somebody's wealth or property and you get the karma that let me steal it because nobody is watching me, let me put it in my pocket and run away. कामना मन में है, So, the desire is there in the mind, उसके लिए आपको but इंद्रियों का उपयोग करना पड़ेगा, you will have to use पैर your चला के वहां तक senses. जाने पड़ेंगे, You will have to हाथ से आप walk उस and वस्तु go को till there. उठाएंगे, You have to use your hands जेब में and रखोगे, grab इसका that मतलब money, तो put it in your pocket, and then run जो away. कामना आई है So, the kamana, the desire that you got in the mind, फिर भी it आप is difficult to इंद्रियों को stop that, but still, और ये you सभी का can regulate your अनुभव senses. भी है And कि everyone has हमें this मन में अनेक experience प्रकार की also कामनाएं आती that हैं, we get so many desires in the mind. कहीं जाते हैं कुछ देखते हैं, Wherever we किसी go, we स्त्री watch, पुरुष को we see देखते so हैं, many उसको things, we watch some आते man हैं, or woman, and we get लेकिन आप उस karma. पर अपनी But इच्छा को then क्रियान्वित तो नहीं करते हैं ना, you do not act on your desire हम every time. हमेशा अपनी इंद्रियों को इस प्रकार से So रोकते हैं, और जो रोक नहीं we सकते वो समस्या में always पड़ते हैं, control our senses, and those who do not तो control, they अनुभव fall है into कि trouble. मन में जो कामना आई उसको But we have this experience. वो तो आ ही जाती है। अगर हमारी बुद्धि ज़्यादा दूषित नहीं हुई है तो हम बुद्धि का उपयोग करके अपनी इंद्रियों को रोक लेते हैं और If हम our गलत काम intelligence करते is हैं। not too polluted, then we can use it and तो refrain इसलिए from भगवान doing wrong कहते हैं कि activities. इंद्रियों को That's why Bhagavan is पहले आप telling नियंत्रण में कीजिए, that first और you जब इंद्रियां regulate the नियंत्रण में आ जाएंगी senses, तो मन भी and when the senses will थोड़ा be नियंत्रण में आएगा, regulated, जब मन then नियंत्रण में there will आएगा, be नियंत्रण आएगा तो some बुद्धि control in the नियंत्रण में mind, आएगी, and और then इस in the प्रकार buddhi से धीरे also. धीरे So in this way, slowly, आप इस काम को त्याग देंगे, you will be इसको able छोड़ to देंगे। give up this karma. दी है, इसलिए अर्जुन का यहाँ बोलते हैं भरतर्षभा, That's why he is referring to Arjuna here as Bharatarshava. भरत जो बहुत बड़े That राजर्षि हुए, उनके Bharat, who वंश was a से, great saintly और king, Arjun was फिर भी born आप श्रेष्ठ हैं। in that dynasty, and Bhagavan is telling you are also the greatest among them. राजा की कहानी भागवत में भी आती है कि किस प्रकार So से King Bharata's story is वो there अपने राज्य को in Srimad त्याग Bhagavatam करके also, वनदेव that आश्रम how में गए he gave up his kingdom, his family, relatives, everyone. और वन में Gave up जाकर के everything and went अपने to the जीवन में भगवान की forest भक्ति की। and did his sadhana. वो बात अलग है कि वो एक हिरण के बच्चे Now में it is आंसू another बहाकर के point उसको that त्याग he किया, got attached to the लेकिन baby और deer, बड़े नहीं पड़े। and then he had to take तो two वो more कथा दूसरी births. है, That is a different aspect, लेकिन इतना तो है कि but उन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया he अपने made a great भक्त के लिए। इसलिए sacrifice. भरतर्षभ शब्द का जो प्रयोग किया है वो ये दिखाने के लिए कि आप He में was such a योग्यता है। powerful king. So that's why Bhagavan is referring to Arjuna as Bharatarshabha, that you also have that ability. पहले आप अपनी इंद्रियों को First of नियमित all, करके इसको you आप regulate your पाप को senses त्याग दो, and तो give up पापमानम this ही papa in the हरन्ति। form of यहाँ kama. काम शब्द का So प्रयोग नहीं here करके instead of पापमानम kama, कहा he has used the word कि ये papa, पापी है। that this पापी is है मतलब sinful, आपको ये पाप कर्म में meaning it will प्रेरित engage you करता है, in लगाता papa, है। in sin. तो जो धर्म है, So the धर्म हमको यही सिखाता है। dharma teaches us जो this धर्म only. के नियम है, The rules of dharma, अहिंसा, सत्य, like non-violence, आस्तेय इत्यादि, truthfulness, वो etc., हमको यही सिखाते हैं कि they हम teach किस us प्रकार this से only, अपनी इंद्रियों that को how we संयमित can करके
control our समाज में senses. तो इसलिए इंद्रिय का संयम करना हमको सिखाता है धर्म। So dharma teaches us to regulate senses. जैसा कि आजकल If there is no dharma in the तो इसका society, परिणाम क्या like है? we see in today's लोगों situation, में अब so then what ऐसी is the बात result? कुछ भी People do खाते not हैं, have any sense कभी भी control. सोते हैं, कभी भी उठते They हैं, eat whatever they किसी के साथ like, भी they संबंध wake up बनाते whenever हैं। they like, they make इसका आज एक relationships बहुत बड़ी with समस्या है, whomever they like. ड्रग्स This is का, a खान पान great की problem वजह से। in today's society. ये Drugs, क्यों है? food, क्योंकि relationships. So इंद्रिय why is को it संयम में like that? रखते हैं और इंद्रिय संयम की Because कोई बात ही there नहीं is है। no control, no regulation of हमारे senses, and देश में nobody even शिक्षा talks प्रणाली about में, it. हमारे जो Our शिक्षा प्रणाली है educational उसमें इंद्रिय system, संयम के बारे में कुछ सिखाया ही नहीं। it doesn't teach anything इसकी about चर्चा sense तक भी नहीं control. होती है। There is no discussion on ये it. सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। Although this is the क्योंकि most, जैसे पहले this is a बताया very कि important thing to be स्वादिष्ट taught. चीजें, Like और it was जैसे told earlier, उदाहरण जो दिया कि आप अगर कार में बैठे हुए like हैं you gave example और आपका कोई that अचानक if you are sitting in the car शत्रु है and तो the आपका जीवन driver खतरे में is चला your जाएगा। enemy, then तो आज भी your स्थिति इसी life प्रकार is की in है। so much danger. So today's इसलिए चारों situation तरफ is like अशांति this only. और So हर everywhere प्रकार की there is घटनाएं होती हैं, uh, हर स्तर पर। chaos, so much साइबर क्राइम, disturbance. Everywhere there is crime, डिजिटल अरेस्ट, cyber crime, digital ये सब का arrest. मूल कारण क्या है? ये काम नहीं What is the करना। main reason behind all this? Or desire only? संतोष नहीं है। धर्म Because हमको if सिखाता है somebody तप, is स्वाध्याय, not satisfied, dharma शौच, teaches us संतोष, ईश्वर पर निधान। tapasya, swadhyay, तो आजकल हमारे जीवन में तपस्या नहीं है, satisfaction. So in our life nowadays there is no शौच tapasya, का कोई विचार ही नहीं है। there is no sense मन of को मर्जी से cleanliness, खाओ, no shuchi. Go wherever you like, कुछ eat भी करो, whatever you like, eat whenever you like. संतोष नहीं, No satisfaction, स्वाध्याय नहीं, no शास्त्र swadhyay. अध्ययन नहीं, There is no और study of ईश्वर पर ध्यान shastra, की तो बात ही छोड़ दीजिए। and forget about तो ये सब meditating धर्म on के अंग Bhagavan. हैं। So जो these are all limbs शास्त्र of में 5 dharma. यम और 5 नियम दिए, 5 yamas इसमें and 5 लिखा है अगर niyamas which are समाज में mentioned in the Yoga Sutra. If समाज में society बहुत सारी follows even this समस्याएं हैं, much, then समाप्त हो so जाएंगी, many problems जैसा कि पहले होता था। will stop. Which and earlier we used to see people used to follow all धर्म हमको, this. बच्चा भी धार्मिक उसमें संस्कार डाले जाएं तो उसकी समझ भी If ना you आए, instill क्योंकि मन की बुद्धि samskaras of तेज dharma होती है, even in a सुबह सुबह child, आपकी समझ होनी चाहिए। लेकिन अगर उसको सुबह सिखाया जाए, माँ बाप अगर सिखाएं कि if सुबह parents teach the child सूर्योदय से पहले that उठना चाहिए, you should wake up ध्यान before करो, sunrise, दंत धावन करो, hmm, फिर थोड़ा go to the स्नान करके toilet, कुछ brush your teeth, भगवान का take ध्यान bath, करो, जप करो, meditate on Bhagavan, do some japa, मंत्र जप asan, कीजिए। ये pranayam. पहले होता था हमारे भारत Earlier, में, this used to सिखाया जाता happen था। in our country. तो अब This उसका was मन, taught. उसकी इंद्रियां स्वाभाविक संयमित रहेंगी, So then, such a child तो will, अब वो कुछ है ही नहीं, it will be easy for him फिर to सब वही है। regulate फिर senses. Nowadays, there is no such system. You wake up late, बेड टी, स्नैक and then खाएंगे, what you want is कभी bed चाय tea, पियेंगे, no bath, no तो अनेक brushing प्रकार के teeth. First, you want अशौच to drink tea. पूर्ण कार्य So करेंगे। there is no sense of और उसका cleanliness, असर फिर हमारे शरीर पर पड़ता है। and then it affects the हमारा body, शरीर जो है वो अस्वस्थ रहता है, और and अस्वस्थ then शरीर में body becomes बुद्धि diseased, भी अस्वस्थ रहती है। and in a diseased body, intellect also वाक्य becomes स्वस्थ diseased. देहे बुद्धया संभवन्ति। अगर शरीर स्वस्थ है तो बुद्धि If भी स्वस्थ body रहेगी। is not healthy, अंग्रेजी में भी कहते हैं साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। if body is not healthy, तो आजकल हमारा intelligence will शरीर not भी be स्वस्थ healthy. नहीं है, हर एक आदमी So nowadays our दवाई लेके body is बैठा also है। diseased. Every person is taking some बुद्धि medicine or the इस other. प्रकार विकृत हो जाती है, फिर विचारधारा हमारी So विकृत then हो buddhi जाती will है। तो also फिर ऐसे व्यक्ति को आप क्या become सिखाएंगे? polluted like that. So what can you उसको आप teach कुछ to धर्म such के a बारे में person? बताएंगे भी तो कहते हैं कि Even हम if you निर्विकार teach होकर सब some कुछ कर रहे dharma हैं। to that person, आज ये बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि आज का युवा कहता है कि हम अपने धर्म के कारण ही पिछड़े हुए हैं। nowadays the youth says तो that due to इसी का because मतलब of है dharma only we have become backward. ग्लानिर्विमोहयति So येषु। this is bewilderment, this is ग्लानि का illusion. मतलब जो चीज, जो ठीक चीज है उसको गलत समझना और गलत को ठीक समझना, ये तो So विमोह है। bewilderment means what is धर्म की right बात you नहीं है। consider it as wrong, आज what की is युवा wrong you कहता है consider कि it as right. आप
Dharma, बुद्धि को स्वस्थ रखता है dharma और makes you उससे well आपको behaved. प्रसन्नता मिलेगी। Dharma makes you happy. तो उसके बारे में अब Your सोचते हैं mind, कि इसके intelligence, कारण हम everything makes it कष्ट happy. उठा रहे हैं, इसके कारण हम दुखी But हैं, people think that because of dharma तो इससे only बड़ा we are इल्यूजन क्या unhappy. होगा। So, what can be a bigger illusion than तो this? इसलिए भगवान कहते हैं कि पाप That's कर्म why तो है Bhagavan ही। says, तो आज तो इसको छोड़ने की कोई बात करता ही नहीं, बल्कि इसको और जितना बढ़ावा दिया जाए कि nowadays अपना काम nobody करो, wants to सिखाया give up जाता है desire. Rather, it कि is अपनी taught इच्छाओं को that you should have नियंत्रित more and से more desire, that you करोड़पति should बनना है, fix your desire upon और this, that यही I want to सोचिए become a millionaire, जो ये and then प्रवचन you should प्रवचन देते think हैं। about the daily. तो वैसे सिखाते हैं कि Motivational आपको बढ़ावा speakers दिए speak like जाएंगे, ऐसी कोई this. बात नहीं करता है। तो So इसलिए they फिर वो teach you विवेक भी to नहीं रहता have है। more and more इसीलिए desire, not to भगवान give ने it up. बताया कि ज्ञान विज्ञान नाशनम, आप So विवेक, then, आपके विवेक when we को lose our vivek also, इसका विनाश कर देता है। तो यहाँ दूसरी देखने वाली बात यह है कि भगवान ने इंद्रियाणी another शब्द point का here प्रयोग is किया है, यानी कि बहुवचन का प्रयोग किया that है। Bhagavan has used the plural, ये ऐसा नहीं है कि केवल आप एक meaning इंद्रिय को it नियमित is कर not लें that you just regulate तो one आप बहुत sense सिद्ध हो गए। and then think that you have become कुछ perfect. लोग ऐसा भी करते हैं Because some people do कि this मौन धारण also, कर लिया that they तो उन्होंने अपने make इंद्रियों a पर take a नियंत्रण vow कर of लिया, silence. They have regulated their लिखते रहते speech, हैं, but then they continue writing, या खाने पर नियंत्रण नहीं है। or they do not तो have इंद्रियों में control मतलब over their सारी eating. इंद्रियों पर So नियंत्रण here करना। Indriyani means to have to regulate और all the नियंत्रण करने का senses, मतलब ये नहीं and है कि हमें regulating इंद्रियों को means विनष्ट करना है। regulating does not mean destroying the नहीं कि senses. आंख के कारण Uh, मेरा मन इधर उधर बहुत Not जाता that है तो मैं because of आंख my को तोड़ eyes लूं। I run here तो and ऐसा there, विधान नहीं है, so I बल्कि ऐसी I destroy my eyes only, because people tell such stories ज्ञानी पुरुष also को that Bilwamangal Thakur ji, आकर्षित हो गया था he किसी became स्त्री को देखकर, attracted to some woman, तो उसने आंख फोड़ ली। and तो he आंख फोड़ने से आपका काम destroyed his ये eyes नहीं only. है कि काम So तो by करेंगे, destroying the eyes, your बुद्धि में karma बैठेंगे, will not go away, because कैसे karma is कार्य seated करना है inside, करेंगे, inside the शास्त्रों में mind तो also, बताएगा, buddhi लेकिन बुद्धि also. में तो दिखाई देगा नहीं। Okay, if you're तो आंख now you ईश्वर don't बनाया have है, eyes, so you cannot see the sense जो बात object, को the ईश्वर बनाया beautiful है वो object, आपके but मन में then आएगी, you फिर will आप see them in your देखेंगे। dreams. Now you will see dreams in the day तो also, इसलिए because you इसलिए don't have भगवान ने eyes. कहा कि इंद्रियाणि मनोबुद्धि So when अस्याधिष्ठान। Bhagavan says, इंद्रियों को माने आपने खत्म भी कर दिया तो अंदर से जो even if you destroy the sense organ, आपका जो मन but में है still बुद्धि में, उसका क्या the करेंगे। vague, the pressure that मान you लीजिए have कि वो within इंद्रिय नहीं for रही fulfilling the बाहर desire, what will you do about that? And if the प्रकट करने के now you लिए, don't have the senses तो अब आपका to मन क्या manifest होगा, those desire, so विचलित now हो what जाएगा। will happen is your mind will वो जो become even शक्ति है more disturbed, because वो तो कहीं that जाएगी नहीं, force, वो that निरंतर power शक्ति है, एक वेग within है। the wave of तो karma इसको of प्रकट desire, इंद्रियों के द्वारा हम करते हैं, we express it through लेकिन our जब senses. आपकी इंद्रियां नहीं रही तो वो शक्ति क्या करेगी, But वो काम now किसी if की you नजर have lost the शक्ति नहीं senses only, करेगी, तो फिर what आपका will you मन do with that विकृत हो pressure? जाएगी। It इसलिए will मानसिक रोगी हो it will जाएंगे। make you mentally disturbed. It बहुत will ऐसे become लोग हैं mentally unsound. मानसिक रोगी जो अपनी, आपने So सुना often it कुंडलियां दबा happens के रखते हैं, that people who try to मानसिक रोगी artificially हो जाते हैं, suppress their मानसिक रोग हो calm, जाते हैं। their एक एक desire, करके they become उदाहरण mentally उसके जीवन में unsound. आप देख सकते हैं, What we see in जिसको modern समझ में नहीं psychology, आना, the उसको कैसे hallucination and all छोड़ेंगे। kinds of problems happen. तो अनेक प्रकार के विकार मन So में पैदा होंगे। तो इसलिए then भगवान we see a lot of ऐसा नहीं problems कह in रहे the कि mind. आप इंद्रियों को आप फोड़ So दीजिए, Bhagavan is not लेकिन telling that you destroy your sense उनको organs, नियंत्रण में but रखिए। what he is telling is that you keep them उनकी जो regulated. प्रवृत्ति है वो ना राग से हो ना द्वेष से हो। Whatever you engage, द्वेष से whichever प्रवृत्ति way होने you का engage मतलब with your sense वो organs, भी it समस्या should है। not be done with raga द्वेष से dvesh. प्रवृत्ति होने का मतलब If you are engaging कोई them with व्यक्ति dvesha, कामना नहीं करता है किसी चीज की, then also there is लेकिन problem, अब जिस चीज because की मैं कामना one नहीं thing करता is उससे that you कोई do इच्छा not हो desire. तो वो भी कामना ही है। But then that is also a kamana. कुछ लोग हैं जो ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, तो स्त्री So से there are संपर्क some नहीं people करेंगे, who are दूसरों से द्वेष brahmacharis, करेंगे, sannyasis, they do not contact दूसरों को women, गाली but देंगे, then अपशब्द they have बोलेंगे, dvesha, हिंसा envy for करेंगे। women,
They use all kinds तो of वो bad एक काम कर रहे हैं। language for women. तो Then, so इसलिए that is also a kind of desire for women only. So Bhagavan तो इस says that प्रकार you से should maintain काम equanimity, के equilibrium. शब्द का प्रयोग है, ऐसे ही उसका जो विरोधी है द्वेष, वो भी काम का ही रूप है, वो सिक्के का दूसरा So पहलू raga है। is for kama only. So dvesh is just the other side of the coin. तो Raga and dvesh are two sides विरोध of the same coin. उसका मतलब ये नहीं है कि हमको अपने आप को भूखा मारना है, लेकिन युक्ताहार विहार से युक्त So चेष्टा it से is not that we should keep the sense organs always जो hungry, आवश्यकता है but whatever is their need, we should feed them accordingly. को भूखा भी नहीं मरना है You don't have और to die out of युक्ताहार भी नहीं hunger करना and don't do overeating also. है। और भागवत में भगवान In जब उद्धव Srimad को उपदेश Bhagavatam, करते हैं तो when Bhagavan is giving instruction to बोलते हैं Uddhavji, 5 इंद्रियों के बारे there में। he tells one very important वो point कहते about हैं कि indriyas, about इन senses. इंद्रियों में So जो Bhagavan 10 says इंद्रिय है, जिह्वा है, that out of all the उसको senses, नियंत्रण करना बहुत कठिन है। it is extremely difficult to control the tongue. और वो कहते हैं कि अगर हम अपनी जिह्वा And को he नियंत्रण में says कर लें that if we तो can बाकी control the tongue, इंद्रियों को नियंत्रण में करना आसान हो it जाता है। will become very easy to control all the other senses. तावत जिते विजितेंद्रिय विजित अन्य इंद्रिय पुमान न जयत रसनम जितम सर्वम जिते रसे। तो भगवान कहते हैं कि अगर आपने सब इंद्रियों को नियंत्रण में कर So लिया लेकिन Bhagavan आप says that if you have regulated all the senses, but your आपने tongue उन is सब not को under control, then लेकिन अगर आपने you will not have जिह्वा control को over any other नियंत्रण कर लिया sense organ. तो But जब if उस you have माध्यम से regulated your आपने tongue, सब चीज पर नियंत्रण कर लिया। then you have जिह्वा practically के दो got regulated इंद्रिय all हैं, other एक senses. ज्ञानेंद्रिय की तरह भी So काम tongue करती है, एक has कर्मेंद्रिय की, यानी कि एक ही है, two roles. It लेकिन works दो as काम करती है, Jnanendriya and ज्ञानेंद्रिय Karmendriya, both. कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय का काम करती है बोलने के लिए, Karmendriya means ज्ञानेंद्रिय की it तरह speak, काम it is करती used है for speaking, रसास्वादन के and लिए। Jnanendriya means it तो is used इसलिए for इसमें tasting. अलग शक्ति है, So it has इनका double दो काम power करती है। because it performs तो बाकी both इंद्रियां the एक एक ही action. कार्य करती हैं, But the लेकिन other senses do इसलिए one इसको work ज़्यादा only. शक्ति But है, tongue has इसलिए double इसको role. नियंत्रण में रखना कठिन है। So it has lot of power, and that's तो why it is इसलिए extremely difficult हमारा to control आहार it. और हम जो अपनी वाणी So से बोलते हैं, what इंद्रियों को we नियंत्रण में eat रखना, and what we यही speak, जिह्वा का नियंत्रण है। having regulation, having control over तो कुछ both. लोग अपने आहार This को is नियंत्रण करते control हैं, of लेकिन tongue. वो बहुत Some people ज़्यादा बोलते हैं, they व्यर्थ की control बातें their करते हैं, eating, but they speak a ज़्यादा lot, अपशब्द का प्रयोग करते हैं, or they use lot of foul उनको language. देखने में आता है। तो इसलिए इसको नियंत्रण में लाना So आवश्यक है। controlling it is और ये very हम देखते important. भी हैं कि अगर And आप we उपवास करते observe हैं also that if you तो do आपकी upavas, सारी इंद्रियां fasting, कमजोर पड़ जाएंगी, your all other senses they देखने will की, become weak. सूंघने की, सुनने की, Seeing, चलने smelling, की, हाथ से काम hearing, करने की, walking, working, लेकिन but खाने की इच्छा प्रबल होगी। the desire for eating will become very strong. तो ये भी इस बात को दर्शाती है कि ये शक्तिशाली So it इंद्रिय है। shows that this tongue और is इसके a very पीछे एक और भी powerful कारण है sense कि organ. हमारा And there is one more reason जो behind that. अस्तित्व है Our वो existence भोजन पर निर्भर करता है। depends on food. अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो हमारा If we do अस्तित्व not समाप्त हो eat, जाएगा। we will die, तो इसलिए भी इसमें ज़्यादा will शक्ति cease to दी है कि exist. अब So, भोजन करना ना छोड़ें। अगर आप मौन धारण कर लेते हैं तो उससे आपकी मृत्यु तो नहीं होगी, if you या आप take a vow कान of बंद कर लें, silence, you किसी will को not सुने die. ना देखें, If you shut your ears, or if नेत्र you ग्रहण ना close करें, your eyes, or if you तो उससे block, तो हम फिर भी if you जीवित रह don't सकते हैं। smell anything fragrant, still you will लेकिन live. अगर हम भोजन ना करें But तो if you do कितनी not देर तक eat, जीवित रहेंगे, how long can you और survive? जीवित भी रहेंगे तो मुर्दे की तरह जीवित And even रहेंगे। if you survive, you will be almost like तो a dead इसलिए भी person only. इसका नियंत्रण करना That's why कठिन है, it is लेकिन जिसको difficult to control नियंत्रण हो this. गया But if you can तो achieve control over this, बाकी पर नियंत्रण आसान होता है। तो then इसलिए it is easy हमारे to धर्म control में others. विभिन्न प्रकार के उपवास That's बताए why हैं, in our dharma, all the उसका कुछ different यही types of कारण है fasting which are ताकि आप prescribed, नियंत्रण
भी कारण है This is निकालने also का, one reason behind that, so वासना that की you वजह get से used to regulating हमको कुछ the तो tongue. नियंत्रण करना ही पड़ता है ना, Because if when upvas or fasting is prescribed, then you have to खाएं या do जलाएं, some control, whether you are eating fruits or वासना only आएगी water. तो नियंत्रण तो करना ही पड़ता है। या फिर जो So हम then you अपने have to control. धार्मिक कृत्य करते हैं उनमें कहा जाता है Or कि when ये we नहीं perform खाइए, religious ऐसे दिन ये ceremonies, भोजन मत and कीजिए, when Shastra prescribes that तो on such and नियंत्रण such day करना you ही do पड़ता not है। eat before this time or eat after इसलिए this हमारे time only, इंद्रियों पर so then you have to do some control. नियंत्रण उससे आता है। और ये जो ज्ञान विज्ञान नाशनम, तो नाशनम का अर्थ यहाँ पर वही है, आवृत, ढकना। So here in Jnana Vijnana Nashanam, here Nashanam also means covering only. न सदृश धातु है, न धातु का अर्थ ही होता है अदर्शन, ना So दिखना। Nash Dhatu means adarshana, not और seeing. ज्ञान के दो अर्थ हैं, एक विवेक अर्थ है और एक शास्त्रीय ज्ञान है So जो शास्त्रों Gyan से हमें here has विज्ञान two प्राप्त meanings. होता One है। is Vivek, that sense of discrimination. Other दूसरा is what we learn in Shastra. सदसद विवेक या चेतना, तो ये वास्तव में उसको ढकता है, So it gets covered. हमारे विवेक को ढकता है, हमारी चेतना को ढकता Our है, हमारे discrimination अंतःकरण को gets ढकता covered. है काम। Consciousness gets covered. Our तो इसमें awareness gets कामना covered. जो है That's why वो lusty person, धार्मिक कृत्य करके या दूसरों को शोषण by करके doing irreligious पूरा activities or जीवन को पार exploiting others or cheating others, he fulfills his desires. क्योंकि उसका Why? विवेक जो हमको ये बताता है कि ये Because गलत है, his Vivek नहीं करना tells चाहिए, him that this is शास्त्र में wrong, we मत should करो, not do it, it is तो against उसको ढकता Shastra, है उस बुद्धि को। तो हमारा जीवन and his buddhi gets शास्त्र covered. परायण होना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते So कार्य our कार्य buddhi व्यवस्थितम, should भगवान गीता में कहते हैं be कि surrendered to Shastra, it should work according to शास्त्र Shastra. के अनुसार As Bhagavan says that we चलना should चाहिए। lead our शास्त्र हमें life कहता है कि ये according to करिए Shastra. मत When कीजिए, Shastra says do this, don't do इस संसार this, में व्यवहार करना चाहिए। knowing this, we should work अगर in this उससे world. हम अपना जीवन नहीं चलाएंगे If we do not तो work निश्चित ही according to यही होगा कि Shastra, then we will हमारे विकारों work की according प्रवृत्ति to बढ़ती Kama. जाएगी। और अगर हम शास्त्र से उसको नियंत्रित नहीं करते हैं तो So फिर if we do not control, कैसे चलेगा? regulate इसलिए according to शास्त्रों का तो Shastra, आज then it सिद्धांत will यही work है according to कि desire. शास्त्रों से केवल अर्थ और काम Because निकलता today है, in the वास्तव में तो society, काम ही there है, is no धर्म नहीं dharma है। and moksha, it is just artha and kama. तो Actually, it इसलिए is kama only. कि हमको Artha is also required. के विषय प्राप्त होते हैं, Earth is हमारा also earned जीवन by में people यही today पुरुषार्थ just रह गया to है fulfill their kama. So there is only one मनुष्य purushartha का remaining in today's society, that is समाज kama. में इतनी अस्त व्यस्तता पैदा है, इतनी And because अशांति, of that, there is so मनुष्य much जीवन कभी chaos, चलता नहीं है काम के लिए disturbance in the कि society. सुख मिलेगा। Karma सुख means विषय में है नहीं, we वो should दुख get में है, happiness, दुख में but है। there is no happiness in the sense और ये objects. गीता They are sources of misery, so सिखाती we है will get misery only. हम सुख चाहते So हैं Gita और is सुख teaching us हमको कहाँ that से we मिलेगा। want happiness and from where we तो will हमारा get जो विवेक happiness. है वो हमारे पास है So पहले our से ही, Viveka, तो we गीता already कहती है have कि it हमारा from कोई खो नहीं beginning. सकता है, मैं आत्मा हूँ इसको Nobody can थोड़ी ले कहीं ले जा जा सकता, उसका तो steal away this विनाश कोई हो नहीं सकता, Tattva उसको Gyan ढका जा that सकता है, we are the लेकिन नष्ट Atma. तो नहीं कर It सकता। can get covered. मैं आत्मा हूँ इसको कोई I नहीं am ढका सकता, Atma, nobody can destroy इस it, ज्ञान को ढका जा but सकता this है। knowledge can be covered. उसी प्रकार मेरा विवेक भी ढक दिया जाता है, वो विनष्ट नहीं, अगर मैं आत्मा Similarly, हूँ my Viveka sense तो of मेरा discrimination also can get तो ये covered. अहंकार So, like का I am Atma, so सबसे Atma बड़ा has ये its है कि ये I-ness. दिखाता है कि मैं दूसरों से भिन्न हूँ। So, Ahankara अगर has this अहंकार main वाला quality व्यक्ति that मैं it मानता हूँ तो मेरे को ये प्रकृति separates है, us. ये औषधि है, We understand we are an ये individual औषधि है, different from other objects, other तो people. आत्मा के अंदर भी अहम है, So, Atma तो also has उसके this अंदर भी Aham, this विवेक है कि I-ness. वो शरीर Means it also has this Vivek, a sense of ऐसा नहीं है, discrimination that it is not this शुद्ध body, गुण ही है उसका, because this is the शुद्ध गुण quality ही of है, Aham. लेकिन वो ढक जाता है जब वो उसके साथ में तादात्म्य अपन्न होता है, But it gets covered भौतिक when माया it के साथ में, gets tadatmya with this तो material, उससे हमको Ahankara. निकलना है। So we have to get out of यही this. शिक्षा भगवान यहाँ पर दे रहे This हैं, is what इसलिए Bhagavan is teaching इसको here. कहते हैं कि इसको आप छोड़ दीजिए। So he is telling that you give it up. और छोड़ने का मतलब And giving up means ये नहीं है कि आप not विषय को छोड़ के कहीं that चले जाएं। you give up the sense objects and go somewhere else. People do this आप also. विषय को छोड़ देंगे लेकिन
So you give up the sense objects. You may give up sense objects, but your karma is seated within. वायरस है, बैक्टीरिया It है, is like suppose you have a bacteria or virus तो inside, सोचेंगे ये you बच्चा have मेरा सोया fever, हुआ है तो मैं इसको and you think that I have fever, so let me leave this place. लोग ट्राई करके बाहर की परिस्थिति बदलना चाहते हैं। People mostly want to change their सोचेंगे कि external मेरे circumstances. भक्त लोग भी They ऐसे ही think, सोचते हैं, साधक भी सोचते हैं कि मेरी कामना Sadak also thinks इसकी that चाहिए, इसको छोड़ I के मैं am यहाँ चला getting जाऊँ, this इसको छोड़ desire के मैं because I am in this place, so let me leave this situation or leave this place. क्या हुआ। तो ठीक है, नंसी ने हाथ खड़ा कर दिया, तो अभी आज का प्रवचन यही समाप्त करते हैं। So we'll stop here, कोई प्रश्न and हो तो if पूछिए। you have any question, you can ask. परमानंद जी का प्रश्न है, भक्ति पथ पर चलने का प्रयास करते हुए हम काम Question: से while कैसे बच attempting सकते to हैं, walk बच on the सकते हैं? path of bhakti, how दूसरा can I प्रश्न avoid कि karma? आसानी से बहकर While trying to अनुभव walk कर in the लिए path जाने of bhakti, I वाले can get easily और carried दूसरा away प्रश्न and कि lose भक्ति my में समझ ability to समझा discriminate and simply किसी बात blindly से follow बहकर what someone tells me without understanding अगर किसी बात why को I should follow those समझना चाहता हूँ, directions. क्योंकि मैं यह महसूस करना चाहता हूँ I follow कि blindly यहाँ because I want to सही feel है, that what I am मैं इसे doing is right समझना and चाहता हूँ avoid that कि I could यहाँ be क्या wrong. करूँ, क्या But in यहाँ the end, I just waste time. एक Is रूप this a form of या karma? And एक if ऐसा so, how to रूप avoid तो इससे this? कैसे बचे? तो आप तो अपनी समस्या का समाधान खुद ही बता रहे हैं। आप आप खुद ही आपका प्रश्न का उत्तर तो आपके प्रश्न में ही छुपा हुआ है। आप कह रहे हैं कि मैं ऐसा So करता हूँ your तो समझ। answer lies in the question itself. So इसमें तो कोई you are telling इसमें तो use कुछ should नहीं कह, use जब buddhi. आप जानते So ही what हैं when you know इसलिए what करते can हैं, somebody else do? When you दूसरा know कहता why है मैं you are doing this, दूसरा कहते हैं मैं उसको करता हूँ। that whatever others say I do तो that. कीजिए, अपनी So then you अपनी just write समस्या in a का diary that I will not do like रोज this. शाम को रात को सोने से पहले अपनी And डायरी निकाल evening के at night जो before मैंने sleep going to जो bed, निश्चय किया you था वो go मैंने through a diary उस and निश्चय के check अनुसार काम that किया है उसको whatever I had determined, I नहीं had करने देता decided, हूँ। did I work accordingly? तो उसको वो When निश्चय you कीजिए उस know पर कि मेरे को नहीं that करना you are है, doing the wrong, if और you are doing the wrong सुधार thing, then you should be determined that you will not do कमी it. मिली मेरे अंदर, क्या कमी थी, And if you could तो not दोबारा से follow उसको your determination, आपके then you should analyze why you failed, कीजिए, उसमें and then कमी you है should तो analyze, दोबारा से you should सुधारता हूँ। find out what was the उसका reason. फिर विश्लेषण कीजिए, उसको Note in आप a diary what all उसको mistakes you are स्पष्ट कीजिए making, and then do reflection कि daily. जो आप नहीं कर पा रहे हैं उस पर करने का What you are प्रयास not कीजिए। able to थोड़ा do, थोड़ा try to do कीजिए, that, and फिर भी कुछ try to नहीं किया improve जाता है। slowly in bits थोड़ा and उसको pieces. कम कीजिए, बिल्कुल आप बंद नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा कम कीजिए उसको, फिर थोड़ा और If you बढ़ाइए। are overeating, then slowly you can समाधान reduce तो that. अपने आप ही करना होगा इसमें, So in this way, you इसका yourself समाधान will भी, have to solve the problem. और समाधान भी You know what is the solution. संदीप जी का प्रश्न है, Next कृपया question. चित्त जड़ ग्रंथि को पुनः Kindly समझाएं। explain Chit Jad Granthi ग्रंथि का again. मतलब होता है कि हमारी आत्मा और शरीर का जो Chit Jad तादात्म्य Granthi होता है, means तादात्म्य तन एक है, there is tadatmya between the शरीर Atma and the इकाई है, material Ahankara. एक इकाई Both बनता है। have combined to become one जैसे unit. जल है, Like घट suppose होता there है, is नमक डालते हैं water and you put घट बनने salt के in the लिए, water, तो जल और नमक तो वास्तव में कभी तो then नमक बनता नहीं है, water does not become घट salt बनता है। and salt does not become water, तो एक ही दिखता but है, then both उसको combine एक ही दिखता है, together ये जल है and और ये it नमक है। looks like one unit जब only. नमक बाहर था तो When आप देख salt सकते was थे कि ये outside, you नमक है, ये could जल है, say that this is salt, this is और जब water. नमक को जल में But डाल दिया after mixing it, तो सब जल ही दिखता है। now everything appears as water only. ऐसे इसी को जड़ चित जड़ So, ग्रंथि कहते हैं। similarly, Chit Jad Granthi is like this. ऋषित जी का प्रश्न है, आपके एक Next आर्टिकल question. में आप फ्लो पुस्तक के बारे में बताते हैं, क्या संस्कार In को one बदलने के article, लिए you ये talk about the पुस्तक book में लगाया Flow. हुआ है, फॉर्मूला लागू होता है? Is this transformation of samskara also discussed in that book और Flow? कुछ नहीं बताया, So, answer: there is nothing about transformation of samskaras in that book. केवल बताया है कि फ्लो
कैसे It आपको just जब says आपका मन how केंद्रित होता है तो किस प्रकार when से your आपको mind is कार्य की सफलता focused, प्राप्त होती you achieve success in your life. यमुना जी का प्रश्न है, Next भगवान श्री question. कृष्ण के प्रति How to प्रीति develop कैसे ला Preeti सकते with हैं Krishna स्वाभाविक रूप naturally से, so that ताकि वैदिक साधना Vaidhi पूरी sadhana तरह does not feel बिना like रस के ना लगे। mechanical without है। इसके taste? लिए आपको गुरु की Answer. शरणागति लेनी होगी। For एक this, तो you have to properly take shelter of Guru. जैसे आपका नाम You से must be having some Guru तो गुरु की because कृपा से होता your है। name seems to be an जैसा initiated शास्त्रों name. में कहा है, So this happens through mercy of Guru. नामर्त्य बुद्ध्या सुयेत सर्वदेव मयो गुरु। सो भगवान तो हमारे सामने अभी उपस्थित नहीं है प्रकट रूप So में। Bhagavan is not वो गुरु रूप में available in front of us in manifest way. हमें So तो गुरु he की बहुत manifests जरूरत as है, Guru. उनकी सेवा So करना, seeing उनकी Guru as सेवा Bhagavan, करना, doing seva to इसी him, से obeying भगवान him, में प्रीति होती है। this is जिस how we प्रति get आपकी Preeti गुरु for में होगी Bhagavan. वैसी भगवान में होगी। The level of Preeti that you इसलिए have for Guru, that much you will have for कभी कभी Bhagavan इस also. चीज को भूल जाते हैं, So अगर हम mostly we संसार में forget हैं इस this, बात को although we समझते know भी this हैं, point theoretically, we have उसको heard, we have भूलना नहीं studied, है। but we have to follow that. प्रश्न है, मैथुन का आनंद लेने से किस प्रकार Next का question. What kind of dukha is obtained by ये enjoying कोई पूछने sex? वाली बात है क्या? संसार में उससे दुख क्या होता है? उससे What बंधन is there होता है, to ask उसको in दोबारा this? करना है, You get bound in बीच this. में से परतंत्र हो जाते हैं। You then आनंद want to do it again and again. तात्कालिक सुख You होता है, उससे become आप ये नहीं dependent सोचें कि यहाँ तो on कुछ दिन somebody दुख मिल रहा else. है। You get some temporary जब आपको ऐसा happiness. लग रहा है कि इससे You क्या don't दुख think होगा, that you are जब getting आपको dukha. व्यक्ति नहीं मिलता तब आपको दुख होता नहीं होता है, आपका मन विचलित So होता when है, you do not find दुखी that रहता है। person, then you become crazy. तो You धीरे search धीरे for आप that विचार person, करते हैं and then you do not. When you do not get कि that, इसके find लिए that person, then you आवश्यक है do कि something मन else. Then you lose your अपने physical ध्येय पर power, केंद्रित नहीं होता है। and your mind cannot focus on what it should focus. प्रश्न है, बाबा जी ठाकुर जी Next की कृपा से question. मैं पिछले 3 साल से By नाम जप कर mercy रही of हूँ, Bhagavan, from लेकिन last 3 years, I am doing Nam Japa. मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन कई बार But many times I have done papa of like Dhatu Nash नहीं कर पा रही without थी उस desire समय। also. मैंने So ऐसी स्थिति में many मैंने times, even after taking Sankalpa, I fall. खान सात्विक और सात्विक भी नियमित होना So चाहिए। answer, your food should be शरीर में sattvic, it अगर should be regulated. शक्ति पैदा होगी तो उसके लिए फिर, और अगर शक्ति उससे ज़्यादा होती है तो उसके लिए फिर कुछ कहीं किसी भी द्वार से निकलना पड़ेगा उसको। तो ये आवश्यक है कि आपका भोजन संतुलित So it नियमित is हो, important that your food उसकी should मात्रा be भी regulated. नियमित होनी चाहिए। Sattvic, it should be in regulated बेफालतू quantity. संग आपको ऐसी चीज़ें मत पढ़िए, मत देखिए जिससे आपके मन Don't में read, don't विकार watch पैदा हो, such things which जिससे पेट को ठीक inflate रखना है, your lust inside. So it is very important मल to विसर्जन ठीक से keep होना चाहिए, the stomach in proper गैस order. ना बने, There should be no gas formation. तो स्वास्थ्य को Bowel should be clean. ठीक रखिए। गीता में So भगवान keep कहते good हैं health. युक्ताहार विहार से। Like in Gita, Bhagavan says, Yuktahara संदीप जी Viharasya. पूछते हैं, 41 नंबर वाले श्लोक Next में question. विज्ञान क्या है? In this verse, what is Vigyan? ज्ञान क्या है? अलग अलग अर्थ हैं उसके। So Vigyan has different meanings. ज्ञान का मतलब परोक्ष ज्ञान है, One, विज्ञान का मतलब if अनुभवात्मक Gyan ज्ञान means है, Paroksha Gyan, then Vigyan is experiential और knowledge. अगर ज्ञान का अर्थ विवेक है And if Gyan means तो विज्ञान discrimination, का मतलब then तत्व ज्ञान। then Vigyan means Tattva Gyan. आनंद लेने के प्रयास के विपरीत भक्ति मार्ग को Next question. What is the चुनने का overall समग्र reason for कारण क्या choosing है? path of bhakti as opposed to attempting जीवन के to सभी enjoy क्षेत्रों में life आनंद at all लेने के levels? प्रयास के विपरीत प्रयास के विपरीत विपरीत हम्म भक्ति मार्ग को चुनने का समग्र कारण क्या है? का सुनने का जी पता नहीं, मेरा प्रश्न समझ नहीं आया मेरे को क्या मतलब।
स्पष्ट कर सकते हो उसका प्रश्न का क्या अर्थ है? तुम्हारी समझ आया क्या प्रश्न है? तुम्हारी समझ आया? तो स्पष्ट बोलो ना यार, ये सब प्रयास व्यास क्या बोलो? आपका प्रश्न क्या ये है कि भौतिक सुख को छोड़कर भक्ति क्यों ली जाए, यही यही है क्या? पता नहीं यही प्रश्न है कि कुछ और है। प्रश्न पूछना भी एक कला है। ऐसे प्रश्न पूछो ताकि हमारी भी समझ में आ जाए। ऋषिक जी का पुनः प्रश्न है, मेरे कहने का मतलब था कि जिस प्रकार से फ्लो पुस्तक में बताया गया है कि So next question, I meant to ask that the way it is described in flow book, उसी प्रकार हमारा that difficulty level, there is a balanced state flow of difficulty level or and skill level. त्याग कर देता है, Similarly, our ahankara कार्य में उबने also gives up in doing very difficult jobs. ये बोल रहे हैं वो कि क्या वो सही समझ रहे हैं? अब देखो, मैंने फ्लो पुस्तक पढ़ी थी कुछ 35 साल पहले। हम आप प्रश्न पूछ रहे हैं फ्लो पुस्तक की, पहले तो आप उस पुस्तक के बारे में मेरे से प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? So I read this flow book 35 years back. I don't know why you are asking me questions on this book. उदाहरण दिया था ना कि मैं फ्लो पुस्तक पढ़ा रहा हूँ। I was not teaching the book flow. I just took an example from there to explain the Siddhanta of Karma. What is the connection of today's class with the book flow? संबंधित हो। You should ask questions को ध्यान नहीं which है are कि related पुस्तक में क्या लिखा to हुआ the है। subject matter. संस्कार की तो कोई बात नहीं है वहाँ पे। I don't remember what is written in that book, but what I remember, I don't remember that there is any mention of samskaras or anything in that. प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् हरि ओम।
ओम तत्सत।